Hey, wonderful audience, how are you? This is Manisha Sharma, and I really welcome to all of you in my YouTube channel once again, guys. How are you all? I hope you all are doing exceptionally good, right, guys? So, today I'm going to announce on my channel that I'm going to start a series of connectors. Yes, guys, connectors. So sometimes it happens that whenever we talk with anybody, okay, while speaking, we don't know how to connect the one sentences to the another. So this kind of problems lots of peoples are facing. We don't know how to spoke exact word to connect one sentences to the another. When you use right kind of connectors in your communication in your spoken English, that right kind of connectors will enhance the beauty of your spoken English, guys, trust me. So I'm going to start one series on my YouTube channel, so please stay tuned with me till the end of the video. All right, so today I'm going to give you one connector that is on the contrary. राइट. सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोल रहे हैं और थोड़ा सा हमें उसके विपरीत बोलना होता है, ओके, तब हम ऑन द कॉन्ट्रेरी का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश कीजिए. जैसे मैं बोलूं, मेरी और मेरी फ्रेंड की बात हो रही है और मैं बोलूं कि यार, माय बॉयफ्रेंड इज सो इनोसेंट यार, आई रियली लव हिम एंड आई रियली वांट टू स्पेंड माय लाइफ विद हिम. मेरी फ्रेंड बोलती है, ओ एक्सक्यूज मी, ही इज नॉट इनोसेंट, ही इज नॉट एन इनोसेंट बॉय, ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज अ ड्रंकर्ड. ओके, इस तरीके से. ओके, जैसे मैं बोलूं कि दिस जॉब इज वेरी मच सुटेबल फॉर मी, आई रियली वांट टू कंटिन्यू दिस जॉब. मेरी फ्रेंड बोलती है, एक्सक्यूज मी, डोंट कंटिन्यू, इट्स गुड, इट्स दिस जॉब इज नॉट गुड फॉर यू, ऑन द contrary, this job will give adverse effect on your health because you have to do a night shift in this company, in this job, right? Understand? ओके, फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं. जैसे मैं बोलूं कि या इफ आई विल बी इन अ प्रॉब्लम, ही विल डेफिनेटली गोना हेल्प मी. मेरी फ्रेंड बोलती है, ओ एक्सक्यूज मी, दे विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ऑन द कॉन्ट्ररी दे विल स्टे आउट ऑफ इट. ओके, this is the examples of, these are the examples of on the contrary. If you like my video, if you understand this, please subscribe my channel and please support me, guys, and I will continue this series and I will give you a lot of good information on my channel. It's my promise to you, so please stay tuned with me. Thank you so very much, guys. Bye bye.